Hello everyone, welcome to chapter Lines and Angles. Today we are going to discuss some questions based upon linear pairs and straight angles. Okay, now our questions are in descending order. We can see here question number 1. We'll begin with our question number 1. In question number 1 we are here to calculate. आपको calculate करना angle AOC, इसकी value है x. Angle BOD, the value of BOD is y. एंड एंगल AOE जिसकी वैल्यू आपकी दी गई है 3x. इन फिगर x, y और 3x ये आपके अननोन है. गिवन एंगल COD इज 90, ये आपका 90 है. एंगल BOE इज 72 एंड एंगल AOB इस कंडीशन गिवन है. एंगल AOB आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी इफ एंगल AOB इज अ स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन पे OE आपकी रे है तो 3x plus 72 according to definition a ray stands on a line then its sum is 180. तो 3x plus 72 आपका कितना हो जाएगा? 180. So the first condition you can see here, since OE stands on AOB, therefore 3x plus 72 is equal to 180. Your reason is linear pair. AOB straight line है, रे OE आपकी कहाँ पे स्टैंड कर रही है? स्ट्रेट लाइन पे. इसका मतलब 3x plus 72 कितना आ जाएगा? 180. So here 3x is equal to 180 minus 72. This is 108. And your x is equal to 108 divided by 3, that is 36 degree. So your value of x is 36. x किसकी वैल्यू थी? AOC. Therefore your angle AOC is equal to 36 degree. Now we are moving on to the BOD. Just see here again. एंगल AOB स्ट्रेट लाइन आपका, तो AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस 90 इज इक्वल टू 180. रीजन AOB आपका स्ट्रेट एंगल है. स्ट्रेट एंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम आपका इक्वल टू 180 होगा. तो AOC x है, x की वैल्यू कितनी है? 36. सो इट इज 36 प्लस BOD आपका y प्लस 90 is equal to 180, right? Therefore, it will be your y is equal to 180 minus, you can see here 90 and 36. So this will give you 126 and this is equal to 54. So you got the result, that is angle BOD is equal to 54. The next is angle AOE. आपका angle AOE is given 3x. So this will be 3 into 36 because already we know the value of x is 36 and this you will get 108 degree. So this is how we have used the property of linear pair and straight line for finding the unknown values in a given figure. Moving on to the question number 2. In question number 2 it's given in figure what value of x will make AOB straight line. आपको बताना है कि AOB straight line है x की किस वैल्यू के लिए. So as ray OC stands on AOB, therefore angle AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. AOC आपका कितना है? 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 180. सो इट इज 5x माइनस 20, 5 माइनस इज इक्वल टू 180 एंड योर 5x इज इक्वल टू 200 एंड योर x इज इक्वल टू 40. So for which value of x
the value of x for AOB to be straight line is equal to 40 degree, right? So this is how we have done our question number 2. Our question number 3. Your question number 3 is a proof. It's given that prove that the bisector of the angles of linear pair. First of all, we'll make a figure. A, O, B, C. Right? Now we have to make their bisectors. Suppose this is D. And this is your E. Right? Now prove that the bisectors of the angles of linear pair are at right angle. So to prove angle EOC plus angle COD is equal to 90 डिग्री. हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये हमारा कितना है, 90 degree. This is to be proved. Now your proof is angle AOC plus angle BOC is equal to 180 because it is a linear pair, right? So we will just divide the whole equation by 2. So half of angle AOC plus half of angle BOC is equal to half of angle 180. You can see that half of angle AOC का half आप ले लीजिए EOC plus BOC का half आप ले लीजिए COD, angle COD, और ये आपका हो जाएगा 90. You can see here क्योंकि OE आपका किसका बाइसेक्टर है, एंगल AOC का, और OD आपका किसका बाइसेक्टर है, एंगल BOD का. So we got the result, hence proved. आप और लिख सकते हैं as OE is angle bisector of angle AOC, and your OD is angle bisector of angle BOC. So this is how we have done the proof. Thank you.